Okay, hello. Welcome back to another video uh, of this session where we started the chapter of electricity. Those who don't know, we have already completed one lecture, and now this is our second lecture where we will be talking about the electric current. In the last video or the last lecture, we talked about the electric charges. We started with understanding of physics. Then we talk about the charges, that two types of charges, what are the properties associated with the charges, and the most important one, the quantization of charges we did. Some more questions also we did on that one. And I guess I left you with one question. Okay, I hope you have tried. If you have tried, I'll tell you the answer. You will be getting answer as 6.6 into 10 to the power 18 number of electrons. Okay, if you have not done, let's start with that question. This was the question, right? I'll show you. This one. Calculate the number of electrons constituting 1 coulomb of charge. Right. So let's take this question here. I'll solve this question, then we'll move to the discussion of conductor, insulators, and semiconductors. After that, we will be talking about the electric current. Okay, I hope audio, video, everything is clear. Okay, so by the way, in this session, we will try to complete the electric current, all the small details, all the aspects of the electric current. We'll talk about the definition, formulas, what is the definition of 1 ampere. Okay, then I'll talk about basically we'll start with the conductor, semiconductor, and insulator. Then I'll go to the electric current, then ammeter, then 1 ampere. Everything, every single detail will be covered here. Believe me, there will not be anything conceptually, no theory will be left. ठीक है, सारी चीजें करेंगे वन बाय वन, एंड एट द एंड तीन चार क्वेश्चंस है, एंड देन वी विल रैप इट अप. ओके, चलो, तो पहले ये क्वेश्चन कर ले. अगर जिनका आंसर आया है यू कैन पुट अ थम्स अप, नहीं आया है तो सी द सॉल्यूशन नाउ. ठीक है, चलो करते हैं नाउ. So bigger one. Okay, this is fine. Yeah, this is fine. Okay, so see what all things are given. By the process we will go. Okay, what is given? The first thing is given is the total charge. Means the Q का value is given as 1 coulomb. Okay. Acha, we already know that the charge on one electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. We have to find the number of electrons. So we know that we know that Q is equals to Ne. Okay, Q equals to Ne. Now Q is given as 1, and I have to find E ka value is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay, so from here n I get 1 by 1.6 into 10 to the power minus 19. Okay, अभी यहाँ पे जिनका मैथ्स खासकर एक्सपोनेंट्स वाला पार्ट अगर वीक होगा, you will find difficulty solving this. Okay, well, I'll try to solve it, uh, make it little easier for you. Try to follow up. This is 1 by 1.6 into 10 to the power minus 19 है. I'm taking it into the numerator, so it will be 10 to the power 18. Okay, so I got 1 by 1.6. Better shall I write 10 by 16 into 10 to the power, no, why I wrote 18 here, 19, no, here 19. Okay, take one decimal place from here and I can write it down as 100 by 16 into 10 to the power 18. I take one 10 from here and multiplied it here. I can cancel it out. Okay, if you are leaving your answer here, it is wrong. Okay, you have to get some number. You cannot put it in the fraction. Okay, so 16 6 is 96, 440, 16 2 is 30. So 16 6 is 96, 440, 16 2 is, sorry. We are getting 6.22. Sorry. I gave this one 6.2. We will get 6.2. Sorry. So 6.2 into 10 to the power 18 electrons will be there in how much charge? In 1 coulomb of charge. ठीक है, क्लियर? समझ आया? अगर नहीं समझ आया, you can rewind the video, you can check it out again. क्लियर है? ये क्लियर है? Okay. Now, let us start with
our today's discussion where uh, we have to start with the conductors, semiconductors, and insulators. Okay. Now, in the last class, we discussed कि in this chapter we will be talking about the movement of charge. Now the question comes is, will the charge move through any of the object? So based on that, I categorize all the objects into three categories. First one is the conductors, second one is the insulators, and third one is the semiconductor. Well, semiconductor is not that important at least now, but I'll give you a little info about that so that in higher classes it will be easy for you to understand that. Okay, now what are conductors? Let us start with the conductors. What are conductors? As you know, in junior classes, we read like conductors are the materials which allow the electric charge to pass through them easily. Okay, लिख दें क्या? चलो लिख देते हैं. These are the materials which allow electric charge to pass through them easily. Easily. Okay. Examples क्या क्या हो सकते हैं? मेटल्स में जैसे कॉपर हो गए, ओके, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, एंड ऑल दोस थिंग्स देयर कैन बी डिफरेंट. सिल्वर वायर हो सकता है. ये सारी चीजें भी इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक चार्ज कंडक्ट करते हैं. ठीक है, ये क्लियर हुआ? ये क्लियर है? टेल मी, देन वी विल मूव. अच्छा, now I'll ask you, see, you can understand it as a, the analogy of a road traffic. Ever seen the road traffic? Okay, road traffic dekha. So there's a big road. Okay, if the road is very broad and easy, like one way kind of, so all the vehicles easily go pass through it easily. Okay, so that kind of road can be understood as a kind of conductor. You can relate it, right? If the road is blocked, if the road is blocked, okay, so the electrons cannot pass, the cars cannot pass through it. Same way, you can understand. Let's assume this is any wire, okay, or any other material, not just wire, any other material in which they are not allowing the uh, electrons to pass through them. So they are considered as an insulator. बात करते हैं सेमीकंडक्टर की. ठीक है, सेमीकंडक्टर की. सेमीकंडक्टर्स क्या होता है? Semiconductors. Any idea? Any prior idea about what is semiconductors? Hmm? What are semiconductors? See, semiconductors does not allow completely, okay, and does not even stop, okay, not stop also, okay. It allows a some amount of electric current to pass through it. Sometimes it stops also. Under different conditions are there. I'll tell you, this is a complete chapter in class 12th in different conditions with doping in the presence of more temperature and all those things. The amount of electric charge that flows varies. Okay, so this type of materials are called as the semiconductors. If you want to take down the examples, some of the examples are silicon, denoted by SI symbol. Okay, और क्या हो सकते हैं? Germanium. Okay, these are considered as the semiconductors. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ओके. नाउ अच्छा, हमने इंसुलेटर्स की बात नहीं करी ना. कंडक्टर्स हो गए, सेमीकंडक्टर्स हो गए, इंसुलेटर्स. इंसुलेटर्स क्या होते हैं? These are the materials, all those materials which does not allow the electric current to
pass through them, pass through them. Okay, एग्जांपल्स में जैसे क्या हो गए? Wood, okay, any plastic, okay, etc, all those things. This does not allow the electric current to pass through it. ये क्लियर हुआ? ओके, अच्छा, एक और अगर यहाँ से भी अगर नहीं समझ आ रहा है तो एक और मैं एक रियल लाइफ सिचुएशन देने की कोशिश करता हूँ नाउ। अज्यूम कि स्कूल का गेट है, ठीक है, इट इज द गेट ऑफ योर स्कूल, ओके, complete bigger one, okay, there's a wall behind, my drawing is so bad, so please don't mind. Now assume कि half of the when completely all the gates are open, okay, completely, okay, then all the students can go through it easily. So is it somehow relate to the concept of conductors? They allow all the electrons to pass through it. Now if the gates are closed, okay, both the gates are closed, they cannot, the students cannot pass through the gate. So that somehow related to insulator, somewhere it is related to the concept of insulator. Acha, what if half of the gate is open? What if the half of the gate is open? In that case, what will happen? What will happen in that case? Some of the students will be able to go from here, others will be, it's not like a stopping, but that flow will not be there. That much a student cannot go at one time. Okay, some restrictions will be there. Some restriction came now. This gate is half open, so some restriction is there. Okay, so it will allow, semiconductors are the material which will allow partially, you can say. Okay, in easier way you can say it is a partially. Okay, is this clear? Is this clear? Okay, now if we talk about the significance, what are the significance of all those things? ऐसा नहीं है कि the conductors conduct electricity or electric current. That's why conductor is only important. No, there is a significance of all. Like when you talk about the conductors, for sure, conductors का काम क्या है कि it will help to conduct the electricity or the electric charge, and because of that we use a lot of electrical equipments in our home. But ever seen any conductor like wire, copper wire? It is a conductor, but around copper wire there is an insulating material. Okay, plastic or any other insulating material. Okay, it is a PVC, I guess, polyvinyl chloride, PVC. Some. It is also an insulator which comes outside of it, which prevents the electric current to pass through it, and also prevents the, if someone touches it, okay, by mistake, so electric charge do not go in their body, because this insulating material is there. Okay, so conductors as well as insulator both are really important. Okay, now coming to semiconductor is a really vast topic. Okay, semiconductors, if I tell you in short that if you remove semiconductors from our technology, whatever the technology we are having, if you remove this part, okay, we will not be having your laptop, your phone, any technological devices. Okay, जिसमें भी एक वर्ड सुना होगा, it comes with the microchip. Microchip is being formed from the semiconductors. अगर semiconductors नहीं होगा, we cannot make the microchip, and all the technology is just waste. It's not possible actually. Okay, at least as of now, it's not possible. So all the technology is dependent on the semiconductor. Yeah, that's why there is a boom of semiconductors right now. Everyone, the country which is having a lot of semiconductor. In future, it is said that in future, in the country which is having more semiconductors with it, will be considered as a superpower. Okay,
So that is about the semiconductor. Well, we need not know much about the semiconductor. Here, uh, it is more than enough to understand about the conductor, and insulator. Okay, that part is cleared, I guess. Okay, with the example, everything is fine. Clear? Now, now we have to start the major topic of today's class, that is the electric current. Electric current. When you when you see this word current, current, is anything coming to your brain? Current. Somewhere we hear the term water current also, like the flow of something, right? Now, let's relate it. Okay, I'll tell you one example. Or let's. There is a question for you. What happens when we switch on a bulb? What happens when we switch on a bulb? What happens when I switch on a bulb? Bulb glows. Bulb glows, right? Well, it may not glow every time, but yeah, when we switch on a bulb, okay, it glows. Now, how does it glow and why does it glow? Now, question comes is why does it glow and how does it glow? Okay, both the questions we will try to understand in this one. Okay, both the questions we'll try to understand that how is this happening. Okay, so see, you can understand the electric current more ever connected like flow of water in pipe. Okay, when you open the pipe, what happens? The water flows in one direction. Okay, water flows in one direction. Same way, you can understand about the electric charge as well. Okay, electric charge or electric current. Let's say there is a conductor. Okay, there is a conductor and electrons are flowing inside it. So electrons I'm showing means the electric charge. Charge. Okay, so electrons or the charges they are flowing inside the conductor and also in the one direction. So electric current is nothing but the flow of electrons inside a conductor. Okay, it is the flow of electrons inside conductor. Conductor. Clear? Inside a conductor. Now, that's why we say it as an electric current because there's not one, two, three, or 10 electrons. There's a billions of electrons that flows through the conductor at a time. Okay, that's why we call it as a electric current. Okay, now when there's a lot of electric current, so for sure there will be a total charge associated with it. Total charge associated with it. Let's say I denote with the letter Q. Okay. Also, uh, let's say this is my wire and this is my cross section area of wire and this many electrons are flowing through the wire. Okay. Now I will put some device here. Okay. That device also I'll talk at the end of this session, which device we use. And I'll start counting how many electrons flows. Okay. But for a reference, we have to take into consideration the time also. Like in this much unit time, how many electrons flows. Okay, then I can compare with the another one. So I take time as a reference point. Okay, like in this much unit time, how many total charge has flow. Okay, so electric current is mathematically given as total charge, okay, flowing through our cross section area per unit time. Okay, electric current is denoted by letter I and total charge is denoted by Q and T is denoted by time T. Okay, so in short, I can write I is equals to Q by T. This is the second formula I am giving. Yesterday I gave one formula, remember? Q is equals to NE. Acha, this Q and this Q is not different.
Both are same only. That's how the formulas will relate. That's why it is important for you to remember all the formulas. Okay. So this is the second formula. I is equals to Q by T, where what is I? I is the total electric current. Q is the total charge and T is the total time. Okay. Is this clear? Clear? Okay. Now, if this is clear, let's just quickly talk a little about the what are the properties of this electric current. Acha, when we talk about the electric current, first one, it is a scalar quantity. Acha, let's talk about its unit. It is measured in ampere. Ampere in short by capital A we do not. Like I can say 5 ampere of current, okay, 13 ampere of current, all those things. Acha, this value cannot be negative. It will always be positive only. Okay. Acha, it is also like not like we need integral values only. We can have 2.3, 2.2 ampere of current also. All those things are possible. Now, it is a scalar quantity. Okay, means if I am having 2 ampere of current and 3 ampere of current, I can add up and I can get 5 ampere of current. There's no problem in that. Okay, so it is a scalar quantity and obviously its SI unit, standard unit is ampere. Ampere denoted by letter A. Okay, clear? Acha. If this is clear, let me check if I'm missing something. No, I guess everything is covered. Okay. About the direction of electric current, we'll talk. No worries in that. Acha, why it is a scalar quantity? I'll give you a little idea why it is a scalar quantity. Although this question is very unique. There are two types of quantities. One is a scalar, one is a vector. Okay, a scalar quantity means some numerical values will be there and some unit will be there. Okay, in vector, some numerical value, some unit is there, plus direction is also there. Okay, now talking about the electric current, for sure, it is having direction. Acha, in the further lecture, I'll talk more in more detail about the डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर फिलहाल के लिए समझ लो कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरह मूव करता है सो फॉर श्योर इलेक्ट्रिसिटी के पास न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे 5 एम्पियर ओके एम्पियर उसका यूनिट हो गया 5 उसका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया और डायरेक्शन भी है स्टिल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी व्हाई any idea because it does not added vec by vector addition. अच्छा वेक्टर एडिशन क्या होता है ये इसके बारे में ज्यादा डिटेल में तो हम क्लास 11th में पढ़ पाएंगे पर फिलहाल मैं ये बता दूं जैसे कि देख लो ये एक बॉक्स पर है अगर मैं यहाँ से एक फोर्स लगाऊं ठीक है और एक यहाँ से फोर्स लगाऊं ठीक है तो ओवरऑल एक मैग्नीट्यूड उसका एक कंप्लीट रिजल्टेंट फोर्स आएगा यही फोर्स मैं यहाँ से हटा के मैं ऐसे कर दूं ठीक है तो ये वैल्यू चेंज होगा समवेयर मे बी ये अब इधर मूव करने लगेगा तो जो फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू है इट डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन दोस टू वेक्टर जैसे कि ये एक फोर्स है ये एक फोर्स है इसके बीच में क्या एंगल बन रहा है उस पे वो डिपेंड कर रहा है ऐड करने पे ठीक है बट इलेक्ट्रिक करंट में ऐसा कुछ नहीं है ठीक है लाइक लेट्स से दिस इज वन वायर दिस इज अनदर वायर यहाँ से 5 एम्पियर आ रहा है यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा है ओवरऑल आई विल गेट टोटल ऑफ 7 एम्पियर हियर ओके अच्छा इफ आई मेक इट दिस ओनली 5 एम्पियर एंड 2 एम्पियर फिर भी यहाँ से 7 एम्पियर ही जाएगा इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एंगल बिटवीन देम इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एंगल बिटवीन वायर्स on the angle made between wires okay so that's why it is a scalar quantity that's why it is a scalar quantity clear है ये clear है बताओ okay अच्छा बात करें एसआई यूनिट की तो एसआई यूनिट हमारा एम्पियर है देयर इज नो डाउट इन दैट
बट उसके अलावा भी जब when we will do the question we will get another units of electric current also. Okay, other यूनिट्स। तो दूसरे यूनिट्स में हमारे पास क्या आ जाता है? पहले तो किलो एम्पियर। ओके, डिनोटेड बाय के ए। अच्छा, 1 किलो एम्पियर में कितना आ जाएगा? किलो का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई विथ थाउजेंड, सो 1000 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, मेगा, 1 मेगा एम्पियर में कितना एम्पियर? 10 to the power 6 एम्पियर। ओके, अब कुछ छोटे वैल्यूज की बात कर लेते हैं। 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर में कितना एम्पियर होगा? 10 to the power -3 एम्पियर। ओके, और 1 माइक्रो एम्पियर में हो जाएगा 10 to the power -6 एम्पियर। इतना इतना काफी है। मोस्टली आई टेल यू 95% क्वेश्चन जो है इसी वैल्यूज में वो घुमा के देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बात होगी सारी चीजें, यूनिट्स की बात होगी, अदर यूनिट्स की बात होगी। अच्छा, अभी इतनी सारी चीजें होगी। सला सो यो एक सिमुलेशन है मेरे पास, सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड the flow of electric current in a circuit in a more interactive way. Let me try to show it. I'll have to change it here. Display capture, Windows capture. Let's go to circuit construction. I Let me check. Just give me one moment. I'll try to share it. AC. Yeah, got it. Thank God. Okay. Now see, this is a FET simulation. I'm very thankful for them. Okay, I'm taking the wires. ये यहाँ connect किया, ये यहाँ connect किया. Okay. अच्छा, by the way, if you want to explore these things, you can for sure use the FET simulation. अच्छा, मैं कोई यहाँ पे advertisement नहीं कर रहा हूँ. FET simulations are easy, free to use, and it is really helpful. Really helpful. ओके, अभी अच्छा यहाँ पे चाहिए एक बैटरी। बैटरी लगा दिया, एंड देन पुट अ वायर। ये हो गया, ये हो गया स्विच। यहाँ से एक यहाँ से एक वायर ऊपर की तरफ, और इसको एक्सटेंड करके ऐड कर दिया। इसको हटा देते हैं। ओके, हो गया ना? लेट मी चेक इफ यू आर एबल टू सी। या, इट इज क्लियर ना? यू कैन सी now. See, if I switch off it, the current stops. When I switch on it, okay, the current starts flowing, and you see the bulb start glowing. Now see, the electrons, the flow of electrons, which move from positive to negative direction. This black side is the positive, yellow side is the negative one, and it is moving from positive to negative direction. It is going inside the bulb. Now, how the bulb glows, that is a different story. So it goes and then coming back to the battery. Okay, so this current, the flow of current of this electric current, that electrons is called the electric current. अच्छा, इसमें बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करने के, सी ऑल दोस थिंग, जैसा सर्किट बनाना है वैसा बना सकते हो। इफ यू वांट आई विल गिव यू द लिंक, और एल्स इजीली जाके सर्च कर सकते हो। यू कैन गो सर्च इट ऑन द गूगल फेट सिमुलेशंस, ओपन करो, एंड या एवरीथिंग इज देयर। यू जस्ट लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर, यू विल एंजॉय इट। ओके, ये क्लियर हुआ? इफ इट इज क्लियर देन आई विल चेंज इट, गो बैक टू वन नोट। नो 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 नो, नहीं आ रहा क्या? वेट, या, गॉट इट, आ गया। So I hope that was clear. That was clear, right? Okay. Now, if that is clear, we can now proceed with this. Let me close this one. Okay. So
What all things we learned? We started with the understanding of conductor, semiconductor, insulator. Then we started with electric current, and then there we got one formula: Q is equals to what? अच्छा, इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। आई इज गिवन एज क्यू बाई टी। ठीक है, इसको चेंज करके ये भी लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू आई टी। तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, सो हम ये दोनों फॉर्मूलाज यूज करने वाले हैं। रिमेंबर, जब भी हम क्वेश्चन करें ऑलवेज पुट द वैल्यूज इन द एसआई यूनिट। जैसे चार्ज का एसआई यूनिट कूलम्ब है, टाइम का एसआई यूनिट जो है सेकेंड है। ठीक है, तो ऑलवेज पुट द वैल्यूज इन दैट यूनिट ओनली। ओके, सो अच्छा, एक और चीज जो लास्ट क्लास में हमने करा था वो वैल्यू भी आपको याद होना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस आएंगे अभी which will connect both the topics. Okay, so that's why you need to know these two things. Clear? Okay, so if that's clear, let's proceed with the questions, right? Okay, already it's been a lot of time, but no problem. We will make it. Okay, now the first question comes is a charge of 300 coulomb, a charge of 300 coulomb, okay, flows through a conductor, flows through a conductor, flows through a conductor in 5 minutes. In 5 minutes. This is our question number one. In 5 minutes, calculate the electric current. Calculate the electric current in the circuit. चलो ट्राई करो, ट्राई करो। तो try it first. Try to get the answer. Pause the video. Try to do it. अगर नहीं हो रहा है then I'll start. ठीक है, करा, ट्राई करा, स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, चलो। So let us start with the solution of this problem. Is this ink visible? Is this visible? I hope so. No? It's visible. Okay, let's use this. So what all things are given? Okay, what all things are given? Total charge is given, which is Q is equals to 300 coulomb, and time is given, which is 5 minutes. अच्छा, इसको चेंज करके अभी चेंज कर लो, which is 6 5 जा 30, 300 second, right? Now we know that what we know that Q, sorry, I is equals to Q by T. ओके, आंसर कितना आ रहा है? बाद में मैं आंसर बता दूं, इसका आंसर जो हो गया 1 एम्पियर आएगा। ठीक है, देखो क्यू कितना है हमारे पास, 300 कूलम। ओके, और टाइम कितना आ गया, 300 सेकेंड। सो टोटल क्या आ गया वैल्यू, इट इज 1 एम्पियर। 300 कट गया, टोटल आंसर विल बी 1 एम्पियर। ठीक है, क्लियर? नहीं क्लियर हुआ, यू कैन गो बैक एंड चेक इट अगेन। वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। ओके, now next question says is if a current of 0.5 ampere, if a current of 0.5 ampere, okay, is drawn by a filament, is drawn by a filament of an electric bulb bulb for 10 minutes. 10 minutes. Find the number of electrons that flows. Find the number of electrons that flows through it. Okay, now try karo. This is the question. Try it. Okay, pause the video. Try to do it. See, every question you'll have to try it. कितना टाइम लगे doesn't matter. Try it first of all by yourself. मेरे को तो फिर आंसर देना ही है, 2 मिनट में सॉल्यूशन मिलेगा, बट फर्स्ट यू ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ। ओके, करें, स्टार्ट करें। ओके, चलो, we start the solution of this problem. See, again, what all things are given? What all things are given? Current of 0.5 ampere. This time current is given. I is equals to 0.5 ampere. It is already given. And the time is given. T is equals to 10 minutes. It means how many seconds? 600 seconds. Acha.
फ्रॉम हेयर कैन वी फाइंड क्यू? क्यू इज इक्वल टू आई टी। अच्छा नहीं आएगा। देखो, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। सो क्यू क्या लिख सकते हैं, आई इंटू टी। सो टोटल चार्ज कितना आ गया, आई मेरे पास है 0.5 एम्पियर, एंड टाइम कितना है अपने पास, 600 सेकेंड। अच्छा 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 मैंने बोला ना, डेसिमल्स है ये सर, डेसिमल्स और एक्सपोनेंट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो दिस इज 300। सो टोटल चार्ज जो हमारा आ गया 300 कूलम। ये आंसर है क्या? चेक इफ दिस इज द आंसर। नहीं रे, ये आंसर नहीं है। क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द नंबर, ओके सी हियर, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज फ्लोइंग थ्रू इट। अभी मैंने बोला ना कि इट विल ट्राई टू रिलेट कनेक्ट द आइडिया ऑफ क्यू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब यहाँ से देखिए, नाउ we also or you can write it as from quantization of charge we know q is equals to ne। ठीक है। अच्छा q का वैल्यू हमें मिल गया 300, n का वैल्यू हमें नहीं पता जो हमें फाइंड करना, और e का वैल्यू वी नो दैट 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके। अच्छा ये वाला जो वैल्यू मैं बार बार बोल रहा हूँ, यूल हैव टू मेमोराइज इट, एग्जाम में ये नहीं देगा, यूल हैव टू रिमेम्बर इट। सो एन का वैल्यू क्या आ गया, 300 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज 3/1.6, ये ऊपर चला गया 10⁻19, और इसका दो जीरो, तो कितना 21 हो गया। देखो इसको मैंने क्या किया, इसको ऊपर भेजा तो पावर हो गया 19 प्लस टू, 20 सॉरी प्लस 19, और इसका दो जीरो, तो प्लस 21। अब 3/1.6 कर लो, इट विल बी 30/16 इंटू 10⁻21। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16, तो 14 140, 16 8 जाएगा, 14 यहाँ से आएगा ना, 40 16, हाँ सो 1.8 ऑलमोस्ट 220, 1.81 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द आंसर आई एम गेटिंग। अगर कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम है यू चेक इट आउट वंस अगेन, बट आइडिया समझो। ठीक है, आइडिया समझो, प्रोसेस कि क्या हमने करा। चार्ज इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ था, ठीक है, टाइम दिया हुआ था, वहां से हमने क्या करा, टोटल चार्ज निकाला, और उस टोटल चार्ज को हमने रख दिया फिर से Q इज इक्वल टू एन ई वाले फॉर्मूले में, एंड फ्रॉम हियर आई गॉट द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, टेल मी, क्लियर क्लियर? check it once again, you can rewind the video, go back again, try to check. Okay, clear clear? Okay, now अच्छा, अ, कुछ एक दो इजी क्वेश्चंस करते हैं, just randomly. Okay, now let's take the question here only. This is question number third. Okay, let me increase the font. Okay, more than enough. If the charge passing through a wire doubles, if we double the charge passing through it, what happens to the electric current? What happens to the electric current? See, clearly I know that I is equals to Q by T. अगर Q का वैल्यू हम डबल करते हैं, 2Q कर दे, ठीक है, तो I भी तो 2 टाइम्स बढ़ जाएगा ना, बिकॉज I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। चार्ज अगर बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, चार्ज अगर कम होगा तो I का वैल्यू बढ़ेगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू बढ़ेगा। I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। ओके, मतलब कि अगर टाइम हम बढ़ा रहे हैं तो I का वैल्यू घटेगा, अगर I बढ़ा रहे हैं तो T का वैल्यू घटेगा। ठीक है, तो अगर इफ आई इंक्रीज द चार्ज बाय ट्वाइस, सो आई विल आल्सो बिकम 2I। ओके, क्लियर है? Similarly, what will happen if the time increases? What if the time increases? Hmm. What if the time increases? If the time increases, what happens to the current? Again, I know the time, right? T. Now, I is fixed, Q is fixed. I am increasing the time. So here, यहाँ पे बताया ना कि I is inversely proportional to time. ठीक है, I is inversely proportional to time. अगर
हम टाइम बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू कम होगा। ठीक है, ये चीज पहले क्लियर हुआ? ठीक है, बता दो। ओके, ये चीज अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं, एक मैं होमवर्क के लिए छोड़ूंगा। ठीक है। ओके, लेट्स टेक द क्वेश्चन एज इट इज। ये एक्चुअली द क्वेश्चन जो है लेटेक कोड में पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा एडिट कर देता हूँ सो दैट वी सेव सम ऑफ आवर टाइम। इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। 6 इंटू कितना था? 6 इंटू 10 to the power 17 is 6 इंटू 10 to the power 17 इलेक्ट्रॉन्स है, passes through a point in a current। कितना टाइम दिया हुआ है? 2 सेकेंड। ठीक है, ये सब लेटेक कोड का कमाल है जो ऐसा ये दे रहा है, बट डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का, अपन है इधर। ना आंसर जो है, अच्छा ये भी है क्वेश्चन कि फाइनल आंसर जो है मिली एम्पियर पे निकालना है। ठीक है, देखो, व्हाट ऑल थिंग्स आर गिवन। ट्राई करना है, कर लो, ट्राई कर लो। 1 2 3 4 5 डन। ओके, डन। ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग। So if 6 into 10 to the power 17, if 6 into 10 to the power 17, this is the number of electrons. 6 into 10 to the power 17 electrons cross a point in a circuit in 2 seconds. Time is given as 2 seconds. What is the value of electric current in milliampere? I, ये तो easy हो गया यार। I is equals to Q by T। But क्यों नहीं दिया हुआ? क्यों नहीं दिया हुआ? ऐसा क्यों नहीं दिया हुआ नहीं है, क्यों चार्ज नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चार्ज का वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो चार्ज हम कैसे निकाल सकते हैं? अगेन क्यू इक्वल्स टू एन ई वाला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्यू इक्वल्स टू एन हमारे पास है 6 इंटू 10 टू पावर कितना, 17, और ई का वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। ठीक है, तो यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो इट विल 16 6 96, 9.6 इंटू 10 टू द पावर, ये प्लस में है या माइनस में है, तो माइनस ज्यादा है, 10 to the -2 कूलम। सो टोटल चार्ज जो हमारा आ गया 9.6 इंटू 10 टू द पावर -2 कूलम। देख लो कैलकुलेशन फिर से चाहिए तो रिवाइंड करके एक बार और चेक कर लो। ठीक है, अभी ये जो Q का वैल्यू है अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे, यहाँ पे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अभी मेरे को निकालना है आई। क्यू का वैल्यू मेरे को आ गया 19.6 इंटू 10 टू पावर -2, और टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम इज गिवन एज 2 सेकेंड। ये इजी है। तो दिस विल कम आउट टू बी, इसको जब कैंसिल करेंगे तो ये 4.8 से कट जाएगा, 4.8 ओनली ना, या 4.8 इंटू 10 टू पावर -2 एम्पियर, इतना करंट आ रहा है। अच्छा, इसको अब मिली एम्पियर में चाहिए। आंसर जो है दे वांट इन द मिली एम्पियर। मिली एम्पियर में जब चाहिए तो हम क्या करेंगे, एम्पियर में एम्पियर टू, एम्पियर से मिली एम्पियर में अगर चेंज करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विथ 1000। ठीक है, तो 4.8 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 1000 मिली एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ से दो जीरो इससे कट जाएगा, ये दो से ये दो कटेगा, और 4.8 में 10 मल्टीप्लाई होगा तो ये 48 मिली एम्पियर आई गेस हमारा आंसर आ जाएगा। अगेन डेसिमल और एक्सपोनेंट्स का खेला है ही, तो ये आपको करना पड़ेंगे, तभी ये चीज आएंगे। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का जो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ। मैं थोड़ा टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। ठीक है, सो ओवरऑल आई गेस अभी तक हमने लगभग सारी बातें कर ली। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट में ऐसा कुछ छूटा नहीं है अभी। ठीक है, ये 10 टू द पावर, ये 10 टू द पावर, मैं लिख देता हूँ 20, 10 to the power 20 electrons है, to flow through a point in circuit, to flow through a point in the circuit if the current is maintained at 0.8 ampere। करंट का वैल्यू दिया हुआ है, देख लो क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, करंट का वैल्यू दिया हुआ है इलेक्ट्रिक करंट, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, कितना टाइम लगेगा, टाइम इस बार पूछ रहा है। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व करने की कोशिश करो खुद से, एंड देखेंगे हम इसका सॉल्यूशन जो है, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छा,
इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने की जो मैं बात कर रहा था, द डिवाइस इज एमीटर। ओके। अच्छा, एमीटर के बारे में वी विल टॉक मोर व्हेन वी विल रीड अबाउट द रेजिस्टेंस टॉपिक जब हम करेंगे, तो देयर आई विल बी टॉकिंग मोर अबाउट द एमीटर। इसको पैरेलल में सेट करते हैं या सीरीज में सेट करते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं। बेसिकली अभी के लिए बस इतना जान सकते हो कि एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू, इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which is used to measure the amount of electric current passing through a conductor, per unit time and all those things. Okay, don't worry, definitions and all ये सारी चीजें तो मेरे notes में obviously you will get it. So yeah, अच्छा, एक important चीज मैं बताता हूँ. What is the speed of, एक interesting thing. This is interesting and the last one. Okay, what is the speed of electric current? What is the speed of electric current? Any idea? It is nearly the speed of light. Nearly. Speed of light. Nearly. That's why when we switch on the plug, suddenly the light glows. Even if you connect a bulb 1 kilometer, 100 kilometers far away, you switch it, it will glow there. Okay, because the speed of electric current is almost the speed of light. But interesting thing is the electrons which is flowing inside the conductor, ये जो electrons है जो conductor के अंदर flow कर रहे हैं, they are not moving with this much velocity. When we talk about the speed of electric current, this is actually the drift velocity. Drift velocity. सी, वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, रीजन इज कि मैं आई एम ट्राइंग टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। ये देखने के बाद और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, मेरे को पता है कुछ चीजें बहुत एक्स्ट्रा भी है, बट इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड यू हैव टू मेक द कॉन्सेप्ट व्हिच विल हेल्प यू फर्दर इन क्लास 11। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे एक एज्यूम कर सकते हो, मान लो दिस इज यू। ओके, बहुत सारे लोग जो है, एक काम करते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग एक दूसरे के पीछे खड़े हैं। नाउ इफ समहाउ इफ दिस पर्सन पुशेस दिस पर्सन, सो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन उठ के एकदम से यहाँ पे चला जाएगा, बट द आगे वाला पर्सन विल ऑल्सो फील दैट वन। लाइक ये इसको लगेगा कि यहाँ से इसको पुश किया, ये इसको पुश किया, ये इसको पुश किया। सो ये जो फ्लो है ना, इट इज मूविंग वेरी फास्टली, बट एक्चुअली द this let's say if these are the electrons, these are not flowing with that much speed, that much rate. ओके, सो वो उतने स्पीड में फ्लो नहीं कर रहा है, इट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बस वो जो इम्पैक्ट है ना, दैट इज फ्लोइंग वेरी फास्टली विच इज द ऑलमोस्ट द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, सो वट एवर वी लर्न इन टूडेज सेशन इन शॉर्ट, can we say that overall, if I have to summarize in just one line, I can say that the electric current is simply the flow of electric charge through a conductor, right? Electric current is simply the flow of electric charge through electric conductor. ठीक है, सो ये वाला एक क्वेश्चन दिया है, किधर गया, हाँ ये वाला एक क्वेश्चन है, यू ट्राई टू डू इट इन योर होमवर्क। कल हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, विल स्टार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन विद वी रियली कंप्लीटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, और कल जो है हम क्या करने वाले हैं, I don't know why I keep on saying Kal, Parso and all. In the next session, better to say in the lecture third. This was the lecture two, and in the lecture third, we'll start with the idea of electric circuit. Okay, and for sure, we will see the simulations also, how to connect different electric circuits, how does it flow. Then one very important thing is the direction of electric current. It is really interesting. I must tell you, it is the one of the favorite one. Okay, it is really important. Then
We'll go further for electric potential, potential difference, and all those things. There's a lot of things to cover, so don't worry. We will complete it one by one. Okay, so I guess the things are clear till now. Okay, so can we just wind it up? I It's clear till here. So thank you everyone, and we'll meet again in the next session. Thank you.